another live session today with we have over here parents who have come from Karnataka, where Haveri. about in Karnataka? Haveri. Haveri. And how old is your son? 1 year. He turned 1 year this month. Okay, 1 year. So what happened with Dhiren? Because Dhiren, when you said in 4 days you came to know that he's having seizures. Tell us about your journey from there. जब आपको पता चला कि सीजर्स आए हैं तो आपने क्या सोचा कि सीजर्स आपको पता चल गए थे कि वो सीजर्स हैं? कुछ पता तो नहीं चला. 4th day हॉस्पिटल लेके गए थे. डॉक्टर ने बोला कि इट्स अ सीजर. वी हैड नो आइडिया व्हाट सीजर. तो पता ही नहीं था कि सीजर क्या होता है. तो वो 1 हफ्ते के लिए आईसीयू में था. आफ्टर दैट टू अनदर वीक ही वाज इन अ नॉर्मल वार्ड. ट्रीटमेंट चल रहा था 15 दिन के लिए. बाद में डिस्चार्ज होके घर आए. तो तब भी पता नहीं था कि सीजर क्या होता है. अच्छा. तो ट्रीटमेंट तो चालू था. लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था जिस तरह होना था. इवन दो मेडिकेशन स्टार्ट हो गए थे पर चेंजेस नहीं आ रहे. चेंजेस नहीं हुए. तो अब अंटिल ही टर्न्स 8 months सीजर्स तो दिख नहीं रहे थे. लेकिन उतना नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था. जैसे रोलिंग या नेक फोल्डिंग तो आया था. हेड कंट्रोल नहीं था, रोलिंग नहीं था, आई कांटेक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था. 8 months के लिए ऐसा ही चला. लेकिन सडनली 8 months के बाद वेस्ट सिंड्रोम स्टार्ट हो गया. अच्छा. That is a lot. कितने आते थे उसको एक दिन के अंदर? 80 to 100 टाइम्स होता था. 80 to 100 टाइम्स होता है. तो उसके बाद नया ट्रीटमेंट शुरू किया बेस्ड ऑन द डॉक्टर. तो वो बहुत हेवी मेडिसिन था. तो इट केप्ट रिड्यूसिंग बट तो डेवलपमेंट तो पूरा जीरो हो चुका था. जीरो हो चुका था. अभी 22 to 25 टाइम्स अ डे करता था. डेवलपमेंट जैसे नेक फोल्डिंग हो या कुछ तो जो भी सीखा था उस टाइम तक तो वो तो चला गया था. वो सारा चला पूरा जीरो बन गया था. ओके. तो जब आप कल आए हैं तो व्हेन यू डिड द ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग तो आपको विद इन 1 hour क्या क्या चेंज लगा? बहुत चेंजेस लगा है. उसका क्या है, चब्बी था उसका चिक्स. बहुत स्लिम हो गया. और हैंड ग्रिपिंग कुछ भी नहीं था. अब पकड़ता है. और थोड़ा हेड कंट्रोल भी हो गया है. थोड़ा हेड कंट्रोल हो गया. फिर जो उसकी आवाज़ आती थी जैसे बहुत ज़्यादा लेटता था तो भी आवाज़ आती थी उसमें ये दिखाओ. ये देखो पकड़ा हुआ है. ऐसे पकड़ेंगे. और ऐसे वो आई एम श्योर यू कुड नॉट होल्ड हिम लाइक दैट एज वेल क्योंकि ये पीछे की तरफ करता था. तो ये आप देख रहे जो बच्चा जो है अपने आप को बैलेंस कर रहा है. जब कल आए थे तो वो बच्चा पीछे की तरफ गला ऐसे करके पीछे चला जाता था. सो बॉडी कंट्रोल भी उसका हुआ है. फिर आपने क्या देखा? और सिटिंग भी जब हम होल्ड करते थे वो जैसे डाउन स्लाइड होता था. अब स्लाइड नहीं हो रहा है. स्टिफ से बैठ रहा है. और उसका हैंड भी ऐसा रहता था. हमेशा टाइट रहता था. तब हम when he used to sit like this, his hand used to be like this. But now his hands are not stiff. They are like loose. We are very happy for that. और जो आँखों का था जैसे वो कभी भी रिस्पॉन्स ही नहीं देता था. अब कैसा है उसका? अब थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट कर रहा था. जो आप बुलाते हैं तो वो आपकी तरफ हल्का सा देख रहा था. सुबह नहीं मैंने उसका नाम पुकारी दिया. धीरन करके वो देख के हंसा. और फिर हंसा भी. अच्छा. ओके. वेरी नाइस. और दूसरा आपको क्या लगा कि जैसे ऑब्जर्वेशन उसकी आजू बाजू का उसकी एक्टिविटी का क्या एक्टिव सीजर्स का? सीजर्स तो बहुत कम हो गया. अच्छा. सुबह से अब तो 3-4 मैक्सिमम. 3-4 मैक्सिमम. इवन दो ही इज इन अ डिफरेंट प्लेस डिफरेंट जगह पे है फिर भी उसको 3-4 हुआ है. आउट ऑफ हाउ मच ही यूज्ड टू गेट इन अ डे? ऑनेस्टली कल इस टाइम पे हमारा सेशन शुरू होने वाला था 24 hours prior. तो जब आए थे सुबह हॉस्पिटल जो होटल में स्टे किया था हमने तो ही वाज लाइक ऑल द टाइम इन जैसे नशे में हो. तो सो उसका थोड़ा फीवर भी था सुबह. तो सोया हुआ था मोस्ट ऑल द टाइम. तो from that session to till now it's 24 hours. So probably 3-4 times he has done it. Okay. And उसका जो आँखों में जो I don't know what word I should be using but that light in his eyes is completely different what he was
बिफोर, पहले वो देख नहीं पाता था कि आंखें नहीं खोल देखने पाता। का तो एक चीज़ है, उसका आंखें हम जब हम देखते हैं ना, तो वो जो नशा का आंखें दूसरी रहती है, एंड नाउ हिज आईज The आर normal eyes are different. हाँ, उसके awareness आंखों आ में गया। जो हमें जो नजर आ रहा है ना, हाँ। दैट्स टोटली डिफरेंट। That's what I was telling you about consciousness. ठीक है, एक होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जब तक वो कॉन्शियसनेस नहीं होता है तब तक हम चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं या चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हाँ, कॉन्शियसनेस जो होती है अगर बच्चे में आ जाती है तो काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर चेंज आ जाता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल न्यूरोप्लास्टिसिटी। कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या करता है कि हर चीज़ को मोल्ड कर देता है, अलग कर देता है, शुरू हो जाता है वो चेंजेस। एंड अभी आपने मुझे क्या बोला था कि वो जो टंग है, हाँ, उसका क्या बताओ? हाँ, वो टंग है ना हमेशा ऐसा ऊपर था। हाँ, जब भी हमें क्या है मेडिसिन डाल देते थे, हाँ, ऐसा टंग को नीचे कर देती थी। अच्छा, हमेशा ये क्यों ऊपर है, तो क्यों ऊपर। हाँ, लेकिन आज तो वो खुद ही डाउन है, और जब तुमने ऐसे टच किया, हाँ, बाहर गया। तो बाहर पहली बार मैंने उसको बाहर करने का देखा। पहली बार। राइट। सो दिस इज योर फर्स्ट टाइम एट नाड़ी योगा। ऐसी थेरेपी आपने कहीं पे देखी हुई है? कहीं भी नहीं। नहीं देखी है। क्या है, डॉक्टर्स क्या बोलते थे, हाँ, इसका ब्रेन तो डैमेज हो गया है, हाँ, क्या करने का, यही Time दवाई, लगेगा। टाइम लगेगा, करेगा, धीरे धीरे करेगा। हाँ, फिजियोथेरेपी करो, ये हाँ, दवाई है, हाँ, ये दवाई इतना तो है, बाद में आप कीटो डाइट जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा वैसा हमको तो बहुत बुरा लग के वापस आ जाते थे, भगवान से प्रेयर करते थे। ऑफ कोर्स क्योंकि ये देखो, जब हम छोटे बच्चे को, खुद के बच्चे को हाथ में लेते हैं तो कभी हम ये सोचते नहीं है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी। You know, that is one thing, and then especially when you have your first child normal, and then never expected this like this. Sometimes I think like, did I did any mistake or what while pregnancy or while delivery time? Like the negative things used to go. The adult girl is so normal and everything. How, what happened? What is this and all, something? Everything will be messed up in our mind. Of course, and I think क्या होता है कि the world has a very good way of pointing all the mistakes to women. You know, it gives a very easy leverage to the male and very hard time to the female, whereas it is not her problem at all, right? तो कभी कभी ये होता है, what मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि अब जो हो गया, you cannot change that, right? What you can change is the present and the future, right? तो हाँ, हो गया, अभी आप जाके किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप ना खुद को ब्लेम करो ना किसी और को, बट इंस्टेड चैनलाइज दैट एनर्जी इनटू हीलिंग योर चाइल्ड। कल मैंने आपको क्या बोला था, थेरेपी के वक्त अगर कोई भी रोया कहाँ जाएगा? बाहर। एंड यू स्टार्टेड टेकिंग द गॉड्स नेम, राइट? डिड यू, अभी कितने रिजल्ट आ गए? हाउ मेनी चेंजेस? अराउंड 10-15 चेंजेस ऑलरेडी आ गए, ठीक है? This is the whole idea of positivity and touching your child with a positive mindset. अभी जैसे हमारे पास जो हैं लोग, अब जैसे आपने भी सोचा होगा कि YouTube में से हम देख रहे हैं, and whether I don't know whether this person or this is fake or whether it is real. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते पता नहीं ये लोग सही में ये सब काम करते हैं या नहीं करते। सी देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल आउट देयर हु विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन, एंड बहुत सारे लोग उल्लू बनते भी हैं, ठीक है? सो व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू वांट टू गिव आउट टू एनी पेरेंट्स हु सॉर्टिंग आउट लाइक, और पीपल हु आर थिंकिंग इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या वो असली है, क्या वो नहीं है? सो टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस विद मी एंड नाड़ी योगा. हाउ डिड इट हैपन एंड हाउ डिड इट गो? I started with my wife finding all your videos in YouTube. Right. And first thing I told her, You're from Poland, right? yeah, I work in Poland. You in Poland, okay. So she started telling me there's something called Naadi Yoga. Let's try it. हाँ. I was like,
too many things happening in the internet, don't believe them. Right. Honestly, so that was my feeling. Right. Then she kept watching all your videos every day. She told me like, let's try once. If it works out, it's good. Otherwise, it's anyway we're spending so much money in other places. Let's give it a try. Right. Then I think I called here and they said the fees. I told like, see, the fees is bit more. Do you really want to try? And she said like, let's give it a try. We have already spent much more than that. How much have you spent so far, if you don't mind? So I can say nearly 8 to 10 lakhs we have already spent. Okay, and no results. So there is no Okay, results. So okay. he is admitted to multiple times to the hospital, and we've been traveling to different cities because in my city there is no proper treatment. And plus medication. Yeah. Okay. Then we thought like we have to travel from all the way south. So Right. and with 2 kids we can't come in like a train or any other option. So only option was a flight. Right. So with all these expenses, do you really want to try? Then she said, let's go. And then we came here. I did not have that complete faith in you. Yes, of course, right? of course. So, when we met you first time, right? So that probably when I entered here, that I felt that positivity. I don't know what's the thing. Then after like the first session, I'm seeing a lot of improvements. I did not have like there will be some miracle will happen and his neck will be completely still, and no, I didn't have that hopes. But what I can see, he has improved 10 to 15% in one session. In one session. Right? Exactly. That's nothing less than a miracle. Right? In just 1 hour session, these many changes. And I'm sure probably next time when I'll come, probably this room will not be sufficient because the entire family would come. And so, but we only take children, his grandparents are like waiting every day, every minute there, like what's happening. And then we told like some changes are coming. They were happy with. I mean, they were crying because of that happiness. I'm so happy that we could be part of this, and thank you for trusting. I would say thank you so much. Thank you so much. But now the real work starts from your side. Sure. Okay, all that I could do at the first, I have restarted the system. Now it's your work to bring him next time so that he's playing around here. Yeah, I will try my level best. I want my son to be cured. He is cured. Look, the things that he's doing, you've noticed he hasn't done things before. Yeah. Right? In 1 year, you've tried like what he said, 8 to 10 lakhs he's spent on everything. This in 3 months will get your son there where you never expected it. Okay? But what do I say? 20% is my work and 80% is my work. right? So you do that. Anything that you require, you let us know. But all that I've explained to you during the whole counseling and everything that we have, work on that. Okay? Work on yourself first. Change your energy. Change the disappointment to excitement. Yes. Right? What I'm sending you with, you have to keep that momentum. Right? And then I'll see you back, and then we will make a second video that we made with Jasnoor recently, the guy, the one that you we met. saw yesterday. Yeah. So he has done like amazingly, like 46 changes in just like 6 months is not bad. Right? And the way his brain has been damaged is much more than your son. So if that can happen to him, your son is going to fly. Then don't tell me that, ma'am, I need to stop him now from breaking things in the house. Okay? So this is what I always say, that be strong. Yeah, sure. Be strong. Never believe if somebody says negative. Okay? People can say, a lot of people say a lot of things about me. A lot of things people would say about you. When you are progressing, when you are making a mark in this place, you will always find people who will want to pull you down. Okay? If your son is getting better, they will put all skepticals in your mind. Oh, this is natural, this is a normal growth. You know, a lot of people will say that, and I have had parents who stopped the therapy because they started believing them. And that what happened was they took 2 years off. Whereas in that 2 years, the child would have been completely cured. At least 70 to 80% changes would have come till then. But what the parents did was they
believed other people. And then what the most important I always say to parents is not money. Money you can earn, but time. Right. Once the skull that is on the outside, if the skull becomes hard, and it's once the sutures they start kind of getting closer to each other, then the brain cannot be manipulated or it cannot be stimulated as much, right? So time is of essence. When we are handling, देखो एक कोई बड़ा होता है, when it is a senior, fine, you know, they've lived their life. I always say that a senior has lived their life, but a child has to live a life, right? So time is something that always make sure कि सब कुछ चला जाए, पर समय का जो यूज़ करना है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है to make anything successful, right? 1 hour के अंदर भी मिरेकल हो सकता है, 10 minutes के अंदर भी मिरेकल हो सकता है, बट अगर आप समय को सही तरीके से समझो. You brought him at the right time and that's why you could see results straight away. ठीक है, I've even had somebody who's 14 years old and I can still bring that change. But जो बच्चे के अंदर consciousness level जो जगाना है वो आप तुरंत कर सकते हैं with the therapy that we do. तो ये चीज़ें ऐसी है कि दूसरों को ना सुन के अपने इंट्यूशंस का सुनो. मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि आपको मिसगाइड करने वाले बहुत लोग होंगे. जो आप सच्चे अच्छे मार्ग में भी जाएंगे ना, तो लोग आएंगे जो आपको बोलेंगे नहीं ये गलत मार्ग है, आप इधर से निकल जाओ. पर रिमेंबर दिस इज़ अबाउट योर चाइल्ड. ये आपके बच्चे के लिए है, और अगर उसका विश्वास आपके ऊपर है कि आप ही मुझे रक्षा करेंगे, आप ही मुझे सही जगह पे ले जाएंगे, तो उसको कभी निराश मत करना. बिकॉज व्हेन दैट चाइल्ड विल ग्रो अप और आप उसकी आंखों में देखेंगे ना, तो यू वोंट बी एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ बिकॉज यू कुड हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू डिडंट. रिग्रेट करने से बेहतर है एक बार ट्राई कर लो. हाँ, that's what I mean. See, that's where I love your positivity, both especially your wife, क्योंकि ये आपको लेके आए हैं. तो मैं मेरे लिए सबसे सही मैं बोलूँ, I saw a lot of females this week, mothers, जिन्होंने बोला कि मुझे किसी ने 1 साल लगा उनके हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए, किसी को 5 साल लगा है उसके हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए. लेकिन और ये तो बहुत सपोर्टिव है, मेरा तो बहुत सपोर्टिव है. जो मैं बोलती हूँ हाँ ट्राई करने का क्या पड़ता है. That's what I mean कि सपोर्टिव है, पर जैसे इन्होंने बोला कि I was doubtful because it was through internet. Yeah. Through Actually, he used to check many things like is it fake, is it reality or what, something. He has browsed everything. See, I always say something. What is a masterpiece will always be expensive than a copyright. ठीक है ना. अगर कोई कॉपी करके कोई मास्टरपीस बनाएगा वो 1000 में बेच देगा, ठीक है, पर जिसने ओरिजिनल बनाया उसको पता है कि वो ओरिजिनल चीज़ मैंने बनाई है और कितना समय लगा है, कितना एफर्ट लगा है, कितनी चीज़ें उसमें गई है, कितना सैक्रिफाइसेस गए. तो वो चीज़ हमेशा विल बी मच मोर एक्सपेंसिव देन व्हाट इज़ द फेक वंस. सो वो चीज़ आप असेस करते हैं कि कितने वीडियोस गए हैं, कितने बच्चे जो है सही हुए हैं. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल हेल्प यू इन असेसमेंट. जैसे आपने एनालाइज किया है और उन्होंने आपको पोलैंड से यहाँ पे बुला के बच्चे को ट्रीटमेंट करवाया है. सो थैंक यू सो मच. और ये मैं हर मदर को कहती हूँ कि डोंट बिलीव इफ़ समबडी हैज़ टोल्ड यू कि आपका बच्चा ऐसा ही रहेगा. अगर आपको विश्वास है, अगर आपकी हर एक नस जो है वो कहती है कि मेरा बच्चा सही होगा ही होगा और मैं करके दिखाऊंगी, तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा आपके बच्चे को स्कूल जाते हुए हर चीज़ करते हुए. एंड ये मेरा प्रॉमिस है कि ये अगर बिलीव करोगे आप तो ज़रूर होगा. अगर आप चलता है होता है करेंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. बट do take this step, but take this step as soon as possible rather than waiting for a year or 2. क्योंकि 2 साल बहुत बड़ी चीज़ है ग्रोथ के लिए, खास करके जब छोटे बच्चे होते हैं. क्योंकि उसके साथ साथ क्या होता है कि बॉडी भी फ्रेश होती है, बॉडी भी इंजरी भी फ्रेश होती है, तो उसको हम जल्दी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, यू वांट
want to say anything last to mothers who are watching? जैसे आप मुझे watch करते हैं. So this is your celebrity time. बताओ. I just say to every mother, like each and every mother, just come to the Naadi Yoga, meet Dr. Nishi Bhatt ma'am, and make your son healthy and like a normal child. And father जो believe नहीं करते थे. believe नहीं, but हाँ नहीं, it's a good thing because see a lot of mothers क्या करती है, father को दिखाते हैं, ठीक है, तो father कहते हैं अरे नहीं जाना है, ठीक है, तो अब की जो आपके experience है वो कैसा रहा? I started with finding a negative review about yours in Google. Yeah, that is right. true. So that it's a fake, but I couldn't find anyone. हाँ. Okay. Then after coming here, like probably I didn't regret that. I in fact I tried in July for appointment. Back in those days it was raining heavily here, Right. so we could not come. I feel like even with the rain, if I had come 2 months ago, my son would have been much better position today. You will be coming here for the second time. Yeah. so yeah, it's a fantastic to be here. It's genuine, honestly. So whoever is watching us, my son was suffering and he has improved a bit, and I'm hoping by the next session he'll be in a much better place than what he is today. So Yeah. thanks to you. And one thing, it's not only the doctor, everybody around this place is fantastic people. They're all helping and they understand us, the kids, and I have my daughter sleeping there and somebody is looking after them. So it's not something like a commercial place, I would say. It's mostly like a friendly place. Yeah, so try Naadi Yoga once. It's a really good place. Thank you so much. And अभी हम we will in 3 months we will check on you again when you are back here. ठीक है? फिर आपने मेरी नाक रखनी है. Definitely. ठीक है? So whatever we have got the results and then we'll get more. Okay? Sure. All right. Thank you so much. Thank you.